Hello students. So we have started with we have completed two topics in this second chapter, uh, nationalism in India. And as we have already discussed, one of the very important chapters of your syllabus. I mean, generally 5 marks questions come from this chapter. That makes this chapter very important. So we have completed two topics, where we have done the introduction part and the coming of Mahatma Gandhi in India and organizing of his Satyagraha movements in India. Then differing strands within the movement, where we have studied about the non-cooperation. Non-cooperation movement में children till now what we used to do is, पहले भी मैंने बताया है, we used to talk about the leaders, but this was for the first time that we have talked about the common people. एक फार्मर क्या कर रहा था, एक what was the tribal person doing, what were the peasants doing, what was the idea of the plantation workers, what was happening in the cities में तो movement बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, but it subsided very fast in the city. So this was a big setback that had happened. गांधी जी को बहुत झटका लगा था because of the, one thing that is very important is alternative arrangements were missing. Got it? Alternative arrangements नहीं होने के वजह से things were taking a very different turn. Okay, children? So we start with the civil disobedience movement. You can see it is very well mentioned here. आपने पढ़ा है these things, this chapter, one thing that is very important is कि things are in a very, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में है, you have already read it, आपको काफ़ी अच्छे से पता है, you know it all, and आपको पता ही है that गांधी जी decided to withdraw the non-cooperation. हाँ, yes children, what is the thing is here now कि the incident that had happened at Chauri Chaura was something that was very sorry state, and this kind of an incident could not be appreciated because many people had died, and ठीक है, I understand. People have lost their control. कितनी बार पेशेंस नहीं रह जाता है, because following, I have already told you that following Gandhi ji's idea of non-violence was a very tough job. Everybody and anybody could not do this civil disobedience, do this satyagraha. Non-violence के लिए you need a lot of internal power, because somebody is continuously beating you and somebody is continuously giving you the losses. So at that time you just can't manage to keep patience. आप पेशेंस लूज़ कर देते हो and then fight starts happening और मारपीट शुरू हो जाती है. ये चीज़ें जो है, यहीं से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं. Now what happened, गांधी जी को बहुत बुरा लग रहा था because he was feeling that, obviously just now I was saying कि मूवमेंट जो है ना वो काफ़ी वॉयलेंट हो रहा था many places, एंड ही थॉट कि जो सत्याग्रही हैं, जो सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ एंड द पीपल हु आर इन द मूवमेंट होल हार्टेडली, अभी ये समझने की ज़रूरत थी कि दीज पीपल should be trained properly first and should be given a chance to understand कि how things needed to be controlled. हर एक चीज़ को अगर करना है, प्रॉपर तरीके से अगर करना है, तो अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, एंड पीपल वेर लूजिंग द सेल्फ कंट्रोल. गॉट इट? सो व्हाट हैपेंड, कांग्रेस में क्या हुआ, सम लीडर्स, गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया, मीन्स वॉट एवर वॉज द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, people were supporting him wholeheartedly and in all the ways Gandhi ji was getting the support.
but some people were feeling that mass struggle needs to be stopped. कहीं ना कहीं पे ये मास स्ट्रगल से बात बन नहीं रही है. Some people are following the non-violence, some people are not understanding the real motive. एंड ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसको अगर रोकना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ दे सेड कि लेट अस पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. आई टोल्ड यू नो वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग कि इलेक्शंस होने वाले थे. ब्रिटिशर्स सेट के इलेक्शंस करते हैं एंड दोज हु पार्टिसिपेट दोज हु विन द इलेक्शंस दे विल बी गिवन अ शेयर इन द गवर्नमेंट. तो उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स से अगर लड़ाई करना है, इफ़ वी नीड टू फाइट द ब्रिटिशर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड what is their plans. उनके तरीके से ही उनको हराया जा सकता है. Got it? These massy people means सब्जी वाले, धोबी, ठेले वाले, I mean all the people, masses को हम involve तो कर लेंगे मूवमेंट में, but then what would be the strategy, what would be the planning, that was not being finalized. तो काउंसिल इलेक्शंस वेयर टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था बेटा 1919 में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोंटेगो रिफॉर्म्स. गॉट इट? वो गवर्नमेंट ने सम हैड गिवन सम गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस. सो एज पर द गाइडलाइंस इलेक्शंस वेयर टू बी हेल्ड. तो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे, सम ऑफ द मेंबर्स वेयर देयर बिकॉज दे सेड कि ब्रिटिश पॉलिसीज, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज. ब्रिटिश को तो अपोज करना ही है, वी नीडेड टू अपोज द ब्रिटिशर्स एंड दे आर्ग्यूड फॉर रिफॉर्म. there was lot of arguments for reform and councils were not very democratic. council elections that were happening बहुत democratic नहीं था. But C.R. Das and Motilal Nehru, they formed Swaraj Party. अब देखो यहाँ से children try to understand that the Congress was started splitting. कांग्रेस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पीपल वेयर चेंजिंग. सम पीपल वेयर सेइंग कि नॉन कॉपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए एंड सम पीपल वेयर सेइंग नो वी विल बी फाइटिंग द इलेक्शंस. अभी बॉयकॉट वाली चीज़ बहुत हो गई बट इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो दे सेड कि लेट अस फाइट विद द ब्रिटिशर्स, सिट इन द पार्लियामेंट, टॉक टू देम. बिकॉज उनको ये मासेस जब आते हैं हल्ला करते हैं, इनडिसिप्लिन वे में बातें करते हैं, दे डोंट लाइक एंड दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड इट वॉज नीडेड दैट opposition should be there in a very disciplined manner. So try to understand. For 1 mark के लिए very frequently asked question, who formed the Swaraj Party? C.R. Das and Motilal Nehru. Yes, of course, Motilal Nehru children, Jawaharlal Nehru's father. And they argued for council politics. लेकिन जवाहरलाल नेहरू, अभी देखो एक ही घर में पिताजी और बेटे जो है बोथ आर हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे प्रेस्ड फॉर मोर रैडिकल मास एजिटेशन and for full independence. Abhi try to understand that the ideology of Motilal Nehru and the ideology of Jawaharlal Nehru, both of these differed. Motilal Nehru, C.R. Das, elder people, they were saying ki let's fight with the British in a very organized manner. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रैडिकल मास एजिटेशन, मतलब भीड़ को सड़कों पे लाते हैं, बंद ऑर्गेनाइज करते हैं. गॉट इट? सो टू व्यूज वेर देयर. एंड व्हाट हैपेंड? कांग्रेस में देयर वाज इंटरनल डिबेट. नाउ इंटरनल डिबेट वाज देयर एज ए just now that we were discussing about the examples.
this debate was leading towards a very different ideology, towards a very different idea of mass agitation. And पहला क्या था, this was the effect of worldwide economic depression. Economically India was totally drained. पहले भी ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी ड्रेन किया हुआ था, लेकिन अभी the situation that was coming up was a bit different. So in India also there was lot of children, as you all can see. Worldwide economic depression was going on because First World War had ended. जब भी कोई वॉर सिचुएशन होता है ना बेटा, उसके बाद द होल वर्ल्ड फेसेस एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड अभी भी वी आर फेसिंग अ वॉर सिचुएशन. यस, दिस इज़ अ वॉर विद करोना. हाँ, ऐसे ही दिमाग में आ गया. सो आई वॉज जस्ट शेयरिंग विथ यू. इट गेट्स वेरी मोनोटोनस ना, खाली ऐसे मतलब वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द चैप्टर. या इट्स वेरी गुड, वी नीड टू कंप्लीट द चैप्टर, बट वी नीड टू एट टाइम्स वी नीड टू डिस्कस द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो. It's a really tough times that we are facing. So war situation, अभी सोचो when the things, अभी तो पूरी चीज़ें नॉर्मल होने में ही टाइम लगेगा, but when the war would be over, the war with corona, it would be a complete phase of economic depression पूरी दुनिया में ना, because the whole world is fighting with this war. Agricultural prices began to fell down 1926 से. And after 1930 what happened, मतलब the farmers were working the same way they were working, but लोगों के पास पैसा ही नहीं था, and the prices were falling, the prices were coming down a lot. So agricultural goods, prices for agricultural goods fell and exports declined. ये पे मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे ना, people were not having money. So the agricultural practices that was happening previously, now it came down to a very critical level, and peasants, the kisan jo the, they found it difficult to sell their harvest. People were, because international market has also finished, because exports had declined. बाहर जितना सामान हमारा जा रहा था, it had finished. What happened, peasants, the farmers found it very difficult to sell their harvest. जो भी वो whatever agricultural work they were doing, nobody was there to really support them. Now what happened, try to understand this thing. 1930 आते आते क्या हुआ, countryside was in turmoil. गाँव, countryside, try to understand. Countryside means शहरों के साथ लगा हुआ जो एरिया होता है ना, शहरों के साथ लगा हुआ जो गांव वाला एरिया होता है, all those places were in facing a heavy crisis. Got it? So in the meantime what happened, Britain में there was a change. The government that was formed in Britain, they formed a commission, statutory commission, or it was headed by, as you know, John Simon. So he set up nationalist movement. इन्होंने nationalist movement set up किया, and this commission was looking into the functioning of the commission. क्यों बना था? Why was the commission made? Try to understand this. Because the Britishers were thinking कि so much of turmoil is there, मतलब इतना वहाँ पे problems हो रही इंडिया में, we need to find out the root cause. So to find out this root cause, they have constituted this commission. इसको इन्होंने बनाया था, and they said कि just go and see what all things are happening in India, why people are so much in unrest, and how is the constitution functioning. The constitutional functions that are happening means whatever changes, whatever things were happening in India, why people are always talking against it, and they also said them कि जाके suggest some changes also. Now
Abhi example, I am giving you one example. Suppose army public school is there, and from Delhi one committee comes, some people from Delhi come, and they say ki we want to just see what is happening in the army public school, and army public school का कोई आदमी हमको उसमें नहीं चाहिए, हम पूरे army public school में घूम घूम के देखेंगे, and wherever we want we'll go, and whatever we want we will do, and we will make our report, but we don't want any army public school member in that. Are you understanding? So how will the army public school members feel कि आप army public school को inspect करने आ रहे हो, you are coming to look into the situations of army public school, लेकिन army public school का कोई member नहीं चाहिए आपको, बताएंगे कैसे? अरे there should be some people who will tell you our problems, who will tell you what all good things we are doing, what all are necessity. तो हम किसी तो army public school के member को रखो. Did you get it? Now we see it in a broad perspective. Broad perspective is this, that the members who were coming to inspect India, they did not have a single Indian member. They were all British. And Simon Commission, when it is coming to look into the problems that was there in India, so that was the demand of the Indian people कि there should be some Indian members in this commission. As a result, when the Simon Commission came to India, it was greeted with the slogan, "Go back, Simon." Many people, they said कि Simon Commission को बिल्कुल oppose करना है, and they opposed it in a very harsh manner. All parties that were there, including the Congress and the Muslim League, all these parties, they were very angry, and they said कि हम बिल्कुल भी Simon Commission को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे, and Simon Commission are coming and looking into the conditions of India, so let them do whatever they want. ऐसे भी they don't want any Indian member in that. So what happened? Opposition started and people started participating in demonstrations, and there was an effort to win them over. तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया ना, he announced in October 1929, he said कि चलो what we do is now we will give you dominion status. Now you will try to understand what is dominion status. Dominion status was that status where they said कि we will make a two-tier government, ठीक है, it would be like the federal system that we are following, but they said dominion status में there is one condition, that center would be ruled by the British and state would be ruled by the Indians. तो क्या मतलब बनता है यहाँ पे? Indians are saying कि they wanted independence और साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे, तो उनको जस्ट थोड़ा सा लुभाने के लिए दे सेट कि चलो चलो वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस, कि मतलब कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लो, बट इंडियंस गवर्नमेंट वुड बी देयर ओनली फॉर द स्टेट्स एंड द होल सेंटर वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. तो दे हैड इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, they decided to discuss future constitution, okay, and Congress was very angry. Congress was not at all satisfied with this. So what happened? The radicals within the Congress, means the people, the people who were very already, जो कि अलग से थोड़ा सा हॉर्श तरीके से ब्रिटिश को समझाना चाह रहे थे, दे सेड वी आर नॉट एट ऑल अग्रीइंग टू दिस. जस्ट सी वन पिक्चर इज गिवन हियर चिल्ड्रन. अभी क्या है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, पिक्टोग्राफिक क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग इन द बोर्ड. वो आपको पिक्चर देके एंड दे विल आस्क यू द डिस्क्रिप्शन, सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज पिक्चर्स दैट आर मेंशन्ड हियर चिल्ड्रन.
आप देख सकते हो, यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऑल दीज पीपल, ऑल दीज लीडर्स हु वर सपोर्टिंग महात्मा गांधी, ये सारे यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं. गॉट इट. नाउ गो बैक. साइमन हो रहा था. इसमें क्या हुआ ना, अभी यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ. आई विल जस्ट टेल यू वन स्टोरी. स्टोरी इज दिस बेटा कि अगेन आई टेल यू, आपने अगर भगत सिंह मूवी देखी होगी, इफ़ यू हैव सीन द मूवी भगत सिंह, चिल्ड्रन प्लीज़ यू नो, चलो आई विल पोस्ट इट ऑन द स्नैप होमवर्क. आप भगत सिंह मूवी देखो एंड प्लीज़ वॉच द मूवी गांधी. उसमें दिखाया गया है कि ये साइमन कमीशन के लिए व्हेन दे वेंट टू पंजाब, अमृतसर में व्हेन दे वेर साइमन कमीशन वेंट, कि जाके देखें व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमृतसर. एंड स्पेशली यू नो दैट जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैड हैपेंड. सो ब्रिटिशर्स were facing lot of opposition and people were not at all ready to tolerate any British nonsense. तो वहाँ पे जब गए तो पीपल वेयर देयर, पूरी भीड़ थी वहाँ पे आउटसाइड द एयरपोर्ट. एंड साइमन कमीशन को दे डिड नॉट अलाउ देम टू एंटर अमृतसर. वहाँ पे लाला लाजपत राय वॉज देयर. ही वॉज लीडिंग दिस अपोजिशन मूवमेंट. वो जो अपोज कर रहे थे ना, उसमें सबसे आगे लाला लाजपत राय वॉज स्टैंडिंग. एंड जब लाठी चार्ज हुआ उसके 10 या 12 दिन के बाद ही डाइड. एंड फ्रॉम देयर वी गेट लीडर्स लाइक भगत सिंह. ठीक लाला लाजपत राय के पीछे ही वो खड़े हुए थे. तो जब जिस समय इनको डंडे पड़े ना, तो ही वॉज द वन जिनकी गोद में लाला लाजपत राय गिर गए. एंड ही वॉज वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश. और उसके बाद भगत सिंह की स्टोरी आपको पता ही है, किस तरह से उन्होंने हाउ डिड ही कैरी ऑन द नेशनल मूवमेंट. गॉट इट. एंड ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ही स्कम्ड टू द ज्यूरीज. स्कम्ड मीन्स मतलब अल्टीमेटली ही हैज़ टू लूज हिज लाइफ. उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा. गॉट इट. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ गो बैक. साइमन काले पट्टी लगा लेते थे, मतलब ऑन अ फुल फोर इंडियन पीपल वे आर अपोजिंग द साइमन कमीशन. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट हैपेंड in the previous topic that we were talking, we have talked about the dominion status. I'm sorry children. Dominion status से क्या हो गया, that Jawaharlal, some leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they were very angry. They said what is the meaning of dominion status, and they became very assertive. Assertive means मतलब they said कि अभी तो कुछ आर पार का डिसीजन लेना पड़ेगा. And what happened, the liberals and the moderates means Naram Dal, मतलब the people who were in a very peaceful manner, who were trying, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion, gradually lost their influence. उन्होंने कहा कि no, अभी क्या हो गया, the leaders who had taken up, they are becoming very popular. Let me make one thing very clear. Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose type of leaders, they were gaining popularity, and they said that they will be taking now harsh steps. They don't want any influence of British in India. अभी ब्रिटिशर्स को उन्होंने कहा अब इनको बाहर निकाल के फेंकना है. मतलब अभी क्या हो गया, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, दैट द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स हु वेर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, दे लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस. इनका जो पावर था ना, इट टोटली फिनिश्ड. एंड व्हाट हैपेंड, दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू there was Congress session of Lahore was there, and they formalized the demand of Purna Swaraj. Lahore में बैठ के they said that now we will start the struggle which will drive the Britishers out of India. Okay, and they said that they are out of the पूर्ण स्वराज, पूरा पूर्ण स्वराज. एंड अभी पूर्ण स्वराज अगर करना है तो वी नीड टू, अगेन वही बात है, वी स्टार्ट अ मूवमेंट एंड विदाउट एनी स्ट्रैटेजी. नो, देयर नीड्स टू बी सर्टेन स्ट्रैटेजी, देयर नीड्स टू बी सर्टेन प्लान.
that was there. And there was to be full independence. And the Indians said कि what will they do 26 जनवरी 26 जनवरी को they would be celebrating as Independence Day. Got it? 26 January would be celebrated as Independence Day, and people were to take pledge to struggle for complete independence. They said कि 26 January because they declared कि now we don't consider British as our leaders, we don't consider British anything. We want a free India, and to fight for free India we are going to drive these Britishers out of India. Britishers को बाहर निकाल के भगाना है, and 26 जनवरी को Independence Day मनाना है. Now children, this is a very important question that is very frequently asked in boards. Abhi I'll discuss it. Wait, let me complete this paragraph. Celebrations attracted very little attention. मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था ना. Many people did not understand. Got it? So Mahatma Gandhi, what did he do? He had to find a way to relate this idea of freedom. महात्मा गांधी ने कहा कि ये अगर फ्रीडम का आइडिया है तो एवरी डे लाइफ का जो इश्यूज़ है ना, वी शुड टॉक अबाउट इट and we should take our everyday issues to the Britishers. Got it? Now just now that I was discussing a very frequently asked question in the boards. The Independence Day pledge 26 January 1930. What is the importance of 26 January in history? Got it? So क्वेश्चन दैट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि इंडिपेंडेंस डे हाँ मतलब कि 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे तो इट इज़ जस्ट द प्लेज दैट इज़ गिवन हियर. आई जस्ट रीड इट फॉर योर रेफरेंस. आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. इट इज़ द इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life. अगर ज़िंदगी की चीज़ों को अगर देखना है तो we have to see that life is very peaceful and we should get full opportunity of growth. So any government who deprives, मतलब British government was there ना. So any government that is depriving Indian people were not getting a chance to participate in any movement. People have right to alter it, to abolish it. And British government has not only deprived Indian people of freedom, but has based itself on exploitation of the masses. Masses को बहुत ज़्यादा परेशान है, masses को बहुत दिक्कत हुई है. So India must sever the British connection and attain the पूर्ण स्वराज. Complete independence की बात हो रही थी बच्चों. अब now people were talking about complete independence. People were not in a mood to tolerate any British nonsense, and that is a frequently asked question. The 26th January was chosen to implement the Constitution in India. अभी what is there is Independence Day हम किस दिन मनाते हैं? Of course Independence Day we will celebrate on the day we have got the independence, and that is 15th of August. But the same condition was not there with the a proper date was to be decided for implementation of Constitution कि Republic हम जिस दिन बन रहे हैं ऐसा दिन चुनना चाहिए which has an importance in history. That's why चूँकि 1930 में we have, and every year after that we were celebrating Independence Day on 26 January. हर 26 जनवरी को हम इंडिया में Independence Day मनाते थे. So the Indians said, it was decided कि 30 जनवरी being a very auspicious one, बहुत हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए बहुत importance रखता है. That's why 26 January would be celebrated as Republic Day.
अभी क्वेश्चन कम्स कि 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस, तो ये मत दे देना वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. सॉरी चिल्ड्रन, when it is asked what is the importance of 26 January in history, you have to mention about this, that the Independence Day pledge was taken on 26 January 1930. Okay children, next topic we'll be doing in the next video. I am going a bit slow in this chapter because मैं चाहती हूँ कि आपको each and every line should be clear to in this chapter. Got it? So I am going a bit slow. एक एक टॉपिक बहुत धीरे धीरे से बता रहे हैं. Just go through it properly and then get your doubts cleared. Thank you children.